Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 में। देखो, पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए सिस्टम गोज अंडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर? ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बी क्रिटिकल टेम्परेचर, सी रिवर्सिबल टेम्परेचर, डी बॉइलिंग टेम्परेचर। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, 1 to 25 क्वेश्चन को देखने के लिए पहला वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके। ओके, ऐसे ही करके हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरी सब्जेक्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। द फाइनल टेम्परेचर। वॉल्यूम लेट V1 से हो गया डबल 2V1। ओके, टेम्परेचर केल्विन में ले लो 300 केल्विन। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर में V varies T, so V1 by V2 equal to T1 by T2. So T2 equal to T1 into V2 by V1. Put the value in this equation. T1 is the 300 into V2। V2 मतलब 3V1, 2 डबल हो गया 2V1 by V1। सो V1 कट जाएगा 300 into 2 600 केल्विन। आंसर जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, सो -273 करोगे तो 327। ऑप्शन सी इज द राइट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? A entropy, B enthalpy, C internal energy, D density. Density is not a extensive property, it is a intensive property. Friends, question number 29. The ratio of the two specific heats of the air is equal 1.41. Gamma equal to Cp by Cv. Cp equal to 1.005, Cv equal to 0.718। डिवाइड करोगे तो आएगा 1.41। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 केल्विन C 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। At 4 degree centigrade, density of the water is maximum and the volume is minimum. Water behaves atmolus behavior. Question number 31. What is the work done for a constant volume process? At a constant volume process, work done, we know that P dV. Volume is a constant, so change in volume 0. Work done is 0. Number 32. When there is no heat exchange between two bodies that are at the same temperature, they are said to be in A. Thermal equilibrium, B. Energy equilibrium, C. Heat equilibrium, D. Electrical equilibrium. A. Thermal equilibrium. Question number 33. Which of the following represents open thermodynamic system? A. Mechanical manual ice cream freezer, B. Centrifugal pump, C. Pressure cooker, D. Bomb calorimeter. All mechanical devices are open system. Okay, centrifugal pump is a open system. Next देखो, constant volume process is also called A. Isobaric process, B. Isochoric process, C. Isentropic process, D. Adiabatic process.
बी आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड heated at constant pressure till the volumes become 3 times, V से 3V हो गया volume, then the temperature. We know that ideal gas equation at constant pressure V1 by V2 equal to T1 by T2. So T2 equal to V2 by V1 into V1. Sorry, T1. So V2 है 3V by V, 3V by V into 300 Kelvin. V कट जाएगा 3 900 माइनस 273 करोगे तो आएगा 627 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 36, टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज A. Internal energy, B. Entropy, C. Latent heat, D. Enthalpy. Total heat of the substance is also known as the enthalpy. The universal gas constant is SI. The universal gas constant is SI unit is equal to 8314, B. 831.4, C. 8480, D. 848. We know that universal gas constant R equal to 8.314 kilojoule per kg Kelvin, किलोजूल पर केजी केल्विन। सो किलो में 10⁻³ ऐड हो जाएगा, करोगे तो 8314 जूल पर केजी केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट, सो ऑप्शन इज द राइट 8314। Question number 38, the process in which no heat enters or the leaves the system is called A. Isobaric, B. Isothermal, C. Isentropic, D. Isochoric. No heat transfer, there is the isentropic process or reversible adiabatic process. Question number 39, molar specific heat of an ideal gas depend on A. its pressure, B. its temperature, C. both its pressure and temperature, D. the number of atoms in a molecules. Molar specific heat, the number of atoms in a molecules. Question number 40, the complete stopping of the molecular motion takes place at absolute temperature. What is the absolute temperature? A. 0 Kelvin, B. 100 degrees centigrade, C. 0 degrees centigrade, D. 273 degrees centigrade. A. 0 Kelvin. Question number 34, constant volume process is also known as isobaric process, isochoric process, isentropic process, adiabatic process. B. Isochoric process. In a thermodynamic system, a process in which volume remains constant is called isobaric, isometric, adiabatic, and isentropic. B. Isometric process, also isochoric process known as a constant volume. The heat absorbed or rejected during a polytropic process is equal to heat absorbed or rejected polytropic process equal to gamma minus n by gamma minus 1 whole to the power half into work done. B. Gamma minus n by n minus 1 whole to the power half into work done. C. Gamma minus n by gamma minus 1 into work done. D. Gamma minus 1 by gamma minus 1 whole square into work done. C. Gamma minus n by gamma minus 1 into polytropic work done. Next question, at what temperature the readings the Fahrenheit and the centigrade scales are same? बचपन से हम लोग जानते हैं जो -14 डिग्री में फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल का जो रीडिंग है सेम होता है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज हीटेड सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, सी कांस्टेंट टेम्परेचर, डी कांस्टेंट एंथैल्पी। बी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम में
इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46, which is the extensive property of a thermodynamic system? A temperature, B specific volume, C pressure, D mass. D mass. Temperature, pressure, specific volume, they are the intensive property. What is the SI unit of the temperature? A Fahrenheit, B centigrade, C Kelvin, D Rankine. C Kelvin. Question number 48. In a isothermal process, internal energy, the gas molecules increase, B decrease, C remains constant, D may increase or decrease. C remains same. Internal energy is the function of only absolute temperature. If the change in intensity occurs at a constant temperature, then the process is called A isothermal, B isobaric, C isochoric, D adiabatic. A isothermal.